हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्न विथ एपी में। इस चैनल में आपको मिलेगा अलग अलग विषयों पर मल्टी चॉइस क्वेश्चन एकदम केबीसी की तरह। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। आपके कितने उत्तर सही हुए यह हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको और किसी टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर सजेस्ट करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप्स के साथ देखें और जानें कौन है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। तो आइए चलते हैं हमारे आज के क्विज की तरफ। Question number 1. The method of separation used to separate stones from rice is Option A. Hand picking. Option B. Threshing. Option C. Winnowing. Option D. All of these. The correct answer is option A. Hand picking. Question number 2. The separation of grains from husk is done by the process of Option A. Hand picking. Option B. Sieving. Option C. Winnowing. Option D. Threshing. The correct answer is option C. Winnowing. Question number 3. Threshing is done by Option A. Beating. Option B. Animals. Option C. Machines. Option D. All of these. The correct answer is option D. All of these. Question number 4. Filtration is a method to separate the components of a Option A. Solution. Option B. Mixture of a liquid and an insoluble substance. Option C. Both A and B. Option D. Pure substance. The correct answer is option B. Mixture of a liquid and an insoluble substance. Question number 5. Petroleum contains Option A. Petrol. Option B. Methanol. Option C. Oil. Option D. Water. The correct answer is option A. Petrol. Question number 6. Which of the following method is used when there is a difference in size and color of desirable and undesirable constituents? Option A. Hand picking. Option B. Threshing. Option C. Filtration. Option D. Decantation. The correct answer is option A. Hand picking. Question number 7. At water treatment plants, the river water is filtered by using Option A. Filter paper. Option B. Porcelain filters. Option C. Cloth filters. Option D. Sand filters.
The correct answer is option D, sand filters. Question number 8. The process of separating grains from the stalks is called. Option A, hand picking. Option B, threshing. Option C, decantation. Option D, evaporation. The correct answer is option B, threshing. Question number 9. A mesh which is used to separate things on the basis of their difference in size. Option A, sieve. Option B, thresher. Option C, filter paper. Option D, none of these. The correct answer is option A, sieve. Question number 10. The property which forms the basis of sieving is. Option A, difference in weight. Option B, difference in color. Option C, difference in shape. Option D, difference in size. The correct answer is option D, difference in size. इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अभी तुरंत हमारे इस चैनल लर्न विद एपी को सब्सक्राइब करें। हमारा मनोबल बढ़ाए रखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आपको और कौन कौन से टॉपिक पर ऐसे वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करें और देखें किसको कितना नॉलेज है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।